No problem. We can continue further. So there are the trees type. ये जो ट्री आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ट्री आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, this tree जहाँ पर each node has got like a multiple child node. Each node has got multiple child node. That is referred as n-way tree or a multi-way tree. जहां पर हर एक नोड के अंदर मल्टीपल चाइल्ड नोड्स आर देयर, दैट इज रेफर्ड एज मल्टीवे ट्री. आई जस्ट राइट इट ओवर हियर समवेयर डेफिनेशन. सो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी मल्टी सॉरी, नॉट दिस, हाँ, मल्टी वे ट्री, और you can say n way tree. What is that? Each node have multiple child nodes. Each node having multiple child node. तो वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक चाइल्ड नोड या दो चाइल्ड नोड या तीन चाइल्ड नोड. ये जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखे थे, ये सारे एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल या फिर ये वाला एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ एन वे ट्री और दिस एग्जांपल ऑफ अ मल्टी वे चाइल्ड ट्री, मल्टी वे ट्री, क्योंकि हर एक के अंदर मल्टीपल चाइल्ड नोड है. तो सर अगर ये मल्टीवे चाइल्ड, अगर हमको ये बनाना है, मल्टीवे ट्री बनाना है, तो हर एक नोड के अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस, हर एक नोड के अंदर वी विल बी हैविंग एलिमेंट समथिंग लाइक दिस. वी विल बी हैविंग integer data, no problem. We'll be having a data, and then we will be having list of node. तो आपके जितने सारे चाइल्ड नोड है, ये जितने सारे चाइल्ड नोड है, सो देयर विल बी द एक्चुअल लिस्ट ऑफ दैट. देयर विल बी एक्चुअल लिस्ट ऑफ दैट, क्योंकि हर एक नोड के अंदर एक चाइल्ड नहीं है. अगर हर एक नोड के अंदर एक चाइल्ड होता तो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिंक लिस्ट बनाया था, सिंगली लिंक लिस्ट बनाया था, तो हम लोगों ने क्या लिखा था? इंटीजर डेटा एंड देयर इज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट. integer data and a pointer to the next. Over here, what we are saying, we are going a step ahead, and now we are talking about that list children. List children क्योंकि यहाँ पर multiple हो सकते हैं, so we are having the whole list. Anyway, we talk about the second example. The second example, even though multi-way trees may not be very common, the binary trees are very common. What is binary tree? The binary tree, there is it is a finite set of nodes partitioned into three subset: root, left subtree, and right subtree. What is the meaning of this? In this particular case, we are saying that हर एक नोड के अंदर, हर एक नोड के अंदर there are two things. One, you have got a data, a one you have got a data, and now अब दो ही है तो लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है. You can simply say we have got left, and we can simply say it is a right. So left and right, and this way you can create a node. So ऐसे ट्री को हम लोग कहते हैं it is a binary tree. This looks quite similar to, your doubly linked list. A doubly linked list में क्या था? doubly linked list में it was a data pointed to the next and pointed to the previous. अब यहाँ पर next और previous हम लोग नहीं कह रहे, we have got a different terminology. We are calling it as a right and a left. We are calling it right and a left. Okay, that is good. But यहाँ पर कोई restriction नहीं है, सिर्फ हम लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा you have got two child node. So here we are saying that it is simply maximum two child nodes for for each for each node, maximum two child node. So I'm saying that a, यहाँ पर b, c, let's say d, e, let's say f, we are saying that g, h. आप लोगों ने नोट किया होगा देयर आर सर्टन वन, कि जहां पर यहाँ पर इसको कोई राइट चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर इसको दोनों चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर इसको राइट चाइल्ड नहीं है. दिस एब्सोल्युटली फाइन. दिस इज एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी ट्री. दिस इज एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी ट्री. और सर कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है. वी आर जस्ट सेइंग इट इज जनरलाइज्ड बाइनरी ट्री. But then what is binary search tree? A binary search tree takes you a step ahead, and it says that it is a binary tree. It is a binary tree in which nodes are arranged according to their values. So यहाँ पर values arrange. So there is some arrangement of the values. And what is the typical arrangement of the values? The typical arrangement of the value is left child, a left child
is smaller than the node, and right child is greater. To be frank, not only greater or equal than the node. So this one we start calling it as like a binary search tree. This is called a binary search tree. Obviously ABCD जब मैं लिखूंगा तो आपको उसमें कुछ पता नहीं चलेगा. We can take it probably some numbers, and if you take it some numbers, then you can visualize it better. You find it over there. In this particular case, here you find that for each node, left is smaller, right is greater. For each node, let's say 30, left is smaller, right is greater. For each node, left is smaller, right is greater. For each node, left is smaller, right is greater. For each node, left is smaller, right is greater. What I see, this kind of tree is said to be binary search tree. So binary search tree, is it a binary tree? Yes, 100% binary search tree is a binary tree. But यहाँ पर nodes का कोई तो arrangement का pattern है. Is the concept of binary search tree is clear to everyone? Is the concept of binary search tree is clear to everyone? What binary search tree is? And if it is clear to everyone, now it's time to ask a question to yourself, sir, how do I create a binary search tree? Binary search tree बनाना कैसे है? लिंक लिस्ट में वैसे ज्यादा राडा नहीं था. लिंक लिस्ट इज काइंड ऑफ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. बीइंग अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या तो आपको नोड एट द एंड ऐड करना है, या तो नोड आपको एट द स्टार्ट ऐड करना है. सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट इट वाज वेरी इजी. यू कैन ऐड इट एट द एंड और यू कैन ऐड इट एट द बिगिनिंग. However, binary search tree, you might want to add it to the left, you might want to add it to the right, depending on इट्स वैल्यूज. तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट में ऐड करना है या आपको राइट में ऐड करना है. आपको लेफ्ट में ऐड करना है या आपको राइट में ऐड करना है. आई विल गिव यू एग्जांपल. सपोज दैट आई एम हैविंग सम सेट ऑफ नोड्स. Suppose that I'm adding a nodes in this order. I'm adding a node, let's say 5. I'm adding a node 8. I'm adding node 2. I'm adding node um, let's say 4. I'm adding node 6. I'm adding node 9. I'm adding node 1. I'm adding node 3. अगर मुझको ये नोड ऐड करने हैं एंड इन अ गिवन ऑर्डर, ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि कोई नोड डुप्लीकेट भी हो सकता है. दैट इज आल्सो फाइन. इन दिस पर्टिकुलर वे अगर मुझको ऐड कर रहा है तो मैं कैसे ऐड करूंगा? तो जहां से शुरुआत करेंगे, प्लीज पे अटेंशन. मैं पहले लॉजिक बता रहा हूं, बाद में हम लोग कोड के ऊपर जाने वाले हैं. पहले लॉजिक समझो, बाद में हम लोग कोड भी लिखेंगे. सो जो भी पहला नोड आएगा, दैट यू कैन मेक इट एज अ रूट. ओके, वेरी गुड. नाउ द सेकंड नोड 8. वेयर 8 शुड गो? बाइनरी सर्च ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं. सो इट शुड गो राइट ऑफ 5. ओके, दैट इज गुड. राइट ऑफ 5. वेयर 2 शुड गो? 2 शुड गो लेफ्ट ऑफ 5. ओके, दैट इज ऑल राइट. यहां तक ठीक है. व्हाट अबाउट 4? वेयर 4 शुड गो? Where 4 should go? Now there is a problem. You find that ये 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है, तो 5 के लेफ्ट में जाना चाहिए. लेकिन 5 के लेफ्ट में ऑलरेडी 2 है, तो फिर इसको 2 के राइट में जाना चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो आपको ऐसे डायरेक्टली जाके 4 ऐड नहीं कर सकते हो. आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा और ट्रैवर्स करके ऐड करना पड़ेगा. वेट, हमारे पास और भी एग्जांपल है. इफ यू गॉट 6, वेयर टू ऐड 6? वेयर टू ऐड 6? आई अंडरस्टैंड दैट 6 अगर इससे ग्रेटर है तो मुझको 5 के पहले राइट में जाना पड़ेगा. लेकिन राइट पे ऑलरेडी 8 है, तो 6 इज लेस देन 8, तो मुझको 8 के लेफ्ट में जाना पड़ेगा. एंड देन आई कैन ऐड 6 देयर. पहले लॉजिक सोचो कि हमें कैसे करना है. प्लीज थिंक ऑफ इट. एंड देन वी वांट टू ऐड प्रोबेबली 9. यू वांट टू ऐड 9. हमें हर एक नोड के ऊपर कंपेयर करना है. वो 9 5 से ग्रेटर है तो राइट में जाओ. फिर 8 इससे ग्रेटर है, सो अगेन यू कंटिन्यू ऑन टू दिस, और 8 के राइट में आप लोग 9 ऐड कर सकते हो. ओके, दैट इज गुड. यू कंटिन्यू फर्दर. आई वांट टू ऐड लेट्स से 1. 1 1 यू कंटिन्यू फर्दर. ए 1 5 से छोटा है तो लेफ्ट में जाओ. बट 2 है, ए 2 से भी छोटा है, तो 1 यू टेक इट ओवर हियर. यू कंटिन्यू फर्दर, इट विल बी देयर. नेक्स्ट वन, यू वांट टू ऐड 3. यू वांट टू ऐड 3 अगेन 5 से छोटा है तो लेफ्ट में जाओ. 2 से, 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है तो राइट में जाओ. बट 4 से वापस से छोटा है, तो फिर
उसके लेफ्ट में जाओ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को ऐड करते वक्त हर एक नोड के ऊपर हमें चेक करना है। बाद में वापस से पूछना मत कि आप क्यों ट्रैवर्स कर रहे हो सर, या फिर क्यों चेक कर रहे हो हर बार। प्लीज नोट दैट, सो यू नीड टू चेक इट एट एवरी लेवल। आपको सिर्फ रूट के ऊपर चेक करके एक बार चेक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इसको चेक करो, फिर नीचे के लेवल पे फिर से चेक करो, फिर उसके नीचे के लेवल पे फिर से चेक करो, उसके नीचे के लेवल पे फिर से चेक करो। आपको हर बार चेक कर करके आपको नोड ऐड करना पड़ता है। पहले बेसिक लॉजिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ओके, आई एम जस्ट गोइंग अहेड, आई एम जस्ट गोइंग अहेड। I want to add 6 once again. Now where do I add 6? Okay, you continue further. A 6 5 से greater है तो पहले right में जाओ, but 6 8 से smaller है, 8 से smaller है तो left में जाओ, 6 8 से smaller है तो left में जाओ, और वापस से 6 equal to 6 है, greater और equal जो होता है वो right में जाता है, greater और equal right में जाता है, then this 6 we will go over here. Now don't ask sir ऐसा क्यों? That is what I already told you the arrangement. If it is left child, it will go to the smaller, and right greater or equal will go to the right, will go to the right. That is something in front of you. All right, now this is how we are supposed to build the tree. तो सर हमें इसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, 100% ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला। और अच्छी बात ये है कि जब हम लोग जावा में जाते हैं, सी प्लस में जाते हैं, सी शार्प में जाते हैं, कहीं पर भी रेडीमेड ट्रीज नहीं होते। तो वहां पर ट्री डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आपको खुद को बनाने पड़ते हैं। सो प्लीज स्टार्ट विजुअलाइजिंग इन दैट सेंस। तो चलो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू ऐड द एलिमेंट्स वन बाय वन। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। अब मैं कुछ नोट्स बता रहा हूं और हम लोग प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप विद डायग्राम हम लोग कोड लिखने वाले हैं। सो प्लीज विजुअलाइज, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस इज क्वाइट सिंपल। The nodes that you want to add is something like this: 50, 30, 10, 50, 30, 10. Then I can say 90, 90, 100. All right. 40, 70, 70, let's say 80, 60, और एक बच गया 20. All right. Now these are all the nodes that I want to add into the binary search tree, and I want to add them in this particular order. So I'm assuming that कि user मुझको इस order में दे रहा है, तो इस order में मुझको इनको implement करना है. Okay, that is good. अगर उसको इस order में implement करना है, how we can start implementing it? तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाया था, एक लिस्ट का क्लास, एक नोड का क्लास, वो वैसे भी सेम ही रहने वाला है। वहां पर नेक्स्ट और प्रीवियस लिखा था, यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिख रहा है। जब ट्री शुरू होगा, जब हम लोग ट्री बनाना शुरू करेंगे, तो ट्री के लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होता है वी कॉल इट एज अ हेड पॉइंटर। लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होता है वी कॉल इट एज अ रूट पॉइंटर। सी द थिंग्स आर सिमिलर, इट इज लाइक अ रूट पॉइंटर। एंड नाउ ऑन द टॉप ऑफ इट, वहां पर इनिशियली हेड इज इक्वल टू नल होता है, यहाँ पर इनिशियली रूट इज इक्वल टू नल होता है। आई जस्ट वांट टू शो यू that the basic structure of doubly linked list and a tree is going to remain same. And if you are able to compare it, if you are able to compare it, let me go ahead, let me go ahead and let me just start implementing. Basic structure पहले implement करते हैं और बाद में add के logic के ऊपर आते हैं, और फिर add का logic हम लोग पेपर वर्क करेंगे और उसके बाद में उसका कोड लिखेंगे। ऐसा प्लान है। Let's say this is BS tree, binary search tree. Okay, this is binary search tree. Please pay attention on the basic code, and this code, if you are getting confused, compare with the doubly linked list code that you have seen. उतना part में अभी लिख रहा हूं. So binary search tree main that I am trying to create. Okay, that looks good. And class binary search tree that I want to create. Okay, that is good. And into this, what we need? We need a static class node. You got static class node. अब नोड के फील्ड्स, नोड के फील्ड्स और बाद में नोड के मेथड्स। ऑल राइट, उसके बाद में आपका जो बाइनरी सर्च ट्री का क्लास है, बाद में आपकी जो ट्री के फील्ड्स और बाद में ट्री के मेथड्स, दिस विल बी योर स्ट्रक्चर।
Let us go ahead. Tell me what will be the fields over there? Integer data. और हम लोग कह रहे हैं ये बाइनरी सर्च ट्री है. बाइनरी सर्च ट्री मतलब ज्यादा से ज्यादा दो ही पॉइंटर चाहिए, तो लिस्ट या एरे लेने की कोई जरूरत नहीं है. कीप इट वेरी सिंपल. हाँ बोलो, व्हाट वी नीड, वी कैन टेक टू पॉइंटर्स जैसे हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में लिए थे, node left and node right. I'm getting both of them. You continue further. You take a constructor. The constructor, I can simply say data is equal to 0, left is equal to null, and right is equal to null. You continue further. You have got like a constructor, public node integer val, data is equal to value, left is equal to null, right is equal to null. All right, this can be done. You continue further. What is the next job? ये तो आई गेस दिस स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिमिलर, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. लेट अस गो अहेड. ट्री फील्ड्स प्राइवेट. अब यहां पर हम लोग इसको हेड नहीं कहेंगे, हेड हम लोग लिंक लिस्ट पे कहते हैं. यहां पर क्या है, यहां पर इट इज अ रूट. यस, द रूट पॉइंटर. एंड दिस रूट पॉइंटर as far as constructor is concerned, initially we can make root is equal to null. Initially we can make the root is equal to null, and then we start adding the methods one by one. One of the method that we want to add it over here is that add the value. अब यहाँ पर add left add right ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पर आपको add करना है, and then depending on its position आपको appropriate जगह ढूंढना है और फिर आपको वहां पर add करना है. So यहाँ से आगे, now this is a logic that we want to build over here. लॉजिक दैट वी वांट टू बिल्ड ओवर हियर. अब हम लोग ये करने जा रहे हैं. सर इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे? एक कॉल कैसे करेंगे, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्री, एंड देन we can think of calling the values one after another. Let's say this is 50. I'll make it public. Okay, so this is 50, and we were saying that next is 30, next 10, next 90, next 100, next 40, next 70. We are trying to add the hard-coded values. You can always go ahead and you can think of adding, taking a value from the user. मेनू ड्रिवन प्रोग्राम अभी आप लोग अच्छे से बना सकते हो. आई एम वेरी श्योर ये आप लोग कर सकते हो. 80 के बाद में कौन सा था? 60, and after 60 I want to add 20. This is something that I want to create it. Okay, that is good. And finally बाद में इसको हमको डिस्प्ले भी करना है, लेकिन डिस्प्ले के बारे में हम लोग बाद में सोचते हैं, हाउ टू डिस्प्ले एंड ऑल दैट. बट फिलहाल तो सबसे पहले लेट अस फोकस ऑन हाउ डू आई वांट टू ऐड द नोड. लेट अस गो अहेड, पे अटेंशन, एंड वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. अभी जो मेरा डायग्राम है, अकॉर्डिंग टू दैट we have got root pointer, and this root pointer at the moment is null pointer. Okay, that is good. A root pointer at this moment it is null pointer, so I understand it is a null pointer. Ab, let us start creating the nodes one by one. The very first thing I am to create 50. Obviously what should be the first step? अगर आपको नोड ऐड करना है तो पहला स्टेप क्या होगा? कॉमन सेंस है, पहले नोड क्रिएट करो और उसको इनिशियलाइज करो. सो दैट स्टेप इज स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम. गो अहेड, create a new node, create a new node, and each node is having three parts. One part, it is having a data, and then it is having pointer to the left, and it is having pointer to the right. By default pointer to the left, pointer to the right, it is null. Let's say इसका address है कुछ तो 100, and this 100 address we can keep in like a pointer, new node pointer like 100. I'm saying that this is pointing to this, that I'm able to see. That is pretty simple. Okay, good. Now look at the diagram, and it is common sense to be followed. At this point, अगर ये मेरा अभी तक मेरे ट्री में कुछ भी नहीं है, the first node that we have created, what should I do? I guess this part is very clear. In this particular case, all I need to do simply says that the root is nothing but new node. अब यही अगर मेरा पहला नोड है, अभी तक मेरा पूरा ट्री अगर एम्प्टी था, all I need to do is that new node का address 100, that we want to point it to this. So this is pretty simple, pretty straightforward logic. So you start with the code,
your very first step is new node is equal to new node, you pass the value. So create and initialize the node, and a very first line you are saying that if root is equal to null, all I want to do is that root is equal to new node, nothing much to be done into this. But if it is not, अब थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, अब थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा. Let us go ahead and think of creating a new node. Let us go ahead, create, start thinking of creating a new node. So I'm creating a new node. The next node, ये अगला कौन सा है? 30. Let me go ahead and I want to create a next node, let's say 30. If I want to create a node 30, so I created a node 30. Let's say it will have some address, whatever. And once it has got address, let's say it is initialized over here. अब थोड़ा सोचो, अब मुझको 30 को ऐड करना है. अ गुड थिंग इज दैट अभी रूट तो नल नहीं है, तो 30 को हम लोग डायरेक्टली इज इक्वल टू रूट कह ही नहीं सकते. अगर हमने डायरेक्टली इज इक्वल टू रूट कहा तो जो 50 आपके पास है वो लॉस हो जाएगा. सो व्हाट आई डू, आई प्रीफर, आई टेक अ पॉइंटर ट्रैव, आई टेक अ पॉइंटर ट्रैव. सो व्हाई यू आर टेकिंग ट्रैव पॉइंटर? डायरेक्टली रूट के साथ क्यों कंपेयर नहीं करते हो? आपको लॉजिक ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, यू नीड टू ट्रैवर्स इट एट द मल्टीपल लेवल्स. वैसे भी आपको आगे जाके मल्टीपल लेवल में ट्रैवर्स करना पड़ेगा. डोंट फॉरगेट दैट. अगर आपको मल्टीपल लेवल में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, प्लीज पे अटेंशन एंड नाउ थिंक ऑफ दिस कि इसलिए आई एम टेकिंग अ ट्रैव इज इक्वल टू रूट एंड देन आई कैन डू द कंपैरिजन. ए न्यू नोड इज 30. 30 is less than trav. If the 30 is less than trav, I find, और वैसे अभी trav के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, so I can always go ahead and say that trav के लेफ्ट में क्या आना चाहिए? नंबर बताना. Don't tell me the code. trav के लेफ्ट में क्या आना चाहिए? Look at the diagram. Address. Which address? Address. नए नोड का address 200. And where the address 200 is there? Where the address 200 is there? See the diagram. Yes, it is there in new node. All I need to do is that trav dot left is equal to new node. Trav dot left is equal to new node. So what I'm saying is that I started with the trav and I have checked there. What I checked there? What I checked there? If if the value to be added is less than trav's data. If the value to be added is less than trav's data, what I have done at this moment, I have written very straightforward. I simply said trav.left is equal to new node. A trav.left is equal to new node. Nothing much we need to do it over here. I hope this is all right. Correct? Let us continue further. But obviously इतना सिंपल तो हमारा कोड नहीं है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे नोड शायद ऐड करने पड़ेंगे. So let us just continue the diagram further. Continue the diagram further, and I want to add one more node. What is the next node that I want to add? Next node that I want to add is 10. Okay, that is good. And if you want to add 10, let me again go ahead, create one more node. I want to add one more 10. Okay, no problem. 10. I just make it 10 over here. Let's say that इसका address है 300. So new node pointer, I'm getting the address is equal to 300. Oh, that is clear. Now in this particular case, I want to add the node. How do I add the node? Yes, you definitely started with trav. Trav is equal to root. You started with. That is good. You compare. A value is 10. 10 is less than trav's data. 10 is less than trav's data. Okay, that is good. But at this moment, can I directly say that trav.left is equal to new node? क्या trav.left is equal to new node? Can I directly say like this? No, because if I say like this, what will happen? Probably I will lose the data 30. 30 का data मेरा चला जाएगा. So I cannot lose the 30. तो what is to be done? अब आपको देखना है, अब आपको ये देखना है, अगर लेफ्ट में ऑलरेडी नोड अवेलेबल है, अगर लेफ्ट में ऑलरेडी नोड अवेलेबल है, then I need to again compare with 30. I hope you are getting my point. अगर लेफ्ट में ऑलरेडी नोड अवेलेबल है, first you go to that particular node, and not only go to that particular node, you again compare with 30, and then you take a decision, इस 10 को 30 के लेफ्ट में डालना चाहिए या इसको 10 के राइट में डालना चाहिए.
Now you need to take a call. So by the way, buddy, I understand over here. If take a look at this, trav dot left is not equal to null. If trav dot left is not equal to null, what I need to do? Oh, trav dot left is not equal to null. I want to go to the left. A trav is equal to trav's left. I can go to the trav is equal to trav's left. So trav जो पहले यहाँ पर root पे था, it come over here. But again, do not stop over there. You need to do the comparison once again. आपको कंपैरिजन फिर से करना पड़ेगा. ये किसका किसका कंपैरिजन करना पड़ेगा? आई नीड टू कंपेयर दिस न्यू नोड विथ द करंट ट्रैव. आई नीड टू कंपेयर दिस न्यू नोड with the current trav. Okay, so I compared once again. And if I compared once again, what I found? What I found? I found that this is still less. Have you noted that? Val is still less than trav dot data. A 10 is less than 30. And if the 10 is less than 30, what I need to do over here? What I need to do over here? Take a look at the diagram. Take a look at the diagram. अब इसके लेफ्ट में और कुछ है ही नहीं. अगर इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, अगर इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, I guess this is a good place. I can think of making this 300 and adding a node over here. Am I correct? इसके लेफ्ट में मैं आराम से इसको ऐड कर सकता हूं. डोंट यूज द वर्ड नेक्स्ट एंड प्रीवियस, यूज द वर्ड लेफ्ट एंड राइट. हम लोग लिंक लिस्ट से ट्री में आ चुके हैं. वेलकम बैक. ओके, सो यू फाइंड दैट अगर वो नल नहीं है, हैव लुक एट दिस, अगर नल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर नल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेफ्ट में चले जाते हैं. अगर नल नहीं होता है तो हम लोग लेफ्ट में चले जाते हैं. अदरवाइज ट्रैव डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, हम लोग उसके अंदर ऐड कर देते हैं. दैट इज व्हाट यू सी द लॉजिक. ओ दैट इज ग्रेट. एंड इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, और भी एक दो नोड ऐड करके आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हो. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग ग्रेट अबाउट दैट. ओके, तो सर ये पार्ट ऑफ कोड मुझको लिखना है. एब्सोल्युटली, प्लीज नोट, आपको इसको लूप में लिखना है. All right, I can just go back and you can start with node trav is equal to root. Okay, that is good. And then you continue further. What I want to do, I want to put it in a kind of a loop. If value is less than trav's data, if value is less than trav's data, अब आपके पास दो possibilities हैं. Possibility number one, it is not equal to null. Okay, you go ahead. If trav dot left is not equal to null, मतलब लेफ्ट में और कोई तो है. अगर लेफ्ट में कोई तो है, go ahead, so go to the left of this and then repeat the loop. And then repeat the loop. तो फिर से एक बार इस लूप को चेक करो, उस लेफ्ट के साथ वापस से कंपेयर करो. यस, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन अगर उसका लेफ्ट नल है, या अगर उसका लेफ्ट नल है, मतलब क्या? नो चाइल्ड इन लेफ्ट. if there is no child in left, what is to be done? Oh, if there is no child in left, if no child in left, all I need to do is hardly one line of part, simply saying that trav dot left is equal to new node. A trav dot left is equal to new node. I can simply assign it there. Oh, my job is done. So what is next job to be done? ए बाय द वे, अभी हमने एलिमेंट ऐड कर दिया है. अब हमें वापस से इस लूप में घूमने की जरूरत है क्या? अगर हमने ट्रैव डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया तो वापस से लूप रिपीट करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है. व्हाट शुड आई डू? आई शुड जस्ट कम आउट ऑफ द लूप. अगर मैंने नोड ऐड कर दिया है तो वापस से लूप में क्यों घूम रहे हो? डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट से ब्रेक, कम आउट ऑफ द लूप एंड देन कंटिन्यू ऑन टू द नेक्स्ट. Go for adding a next element. So just now I shown you a 50 we have done, 30 we have done, 10 we have done. But what about if I want to add 90? Now you will find that the logic goes on a similar line to the right side as well. Logic will go similar line on the right side as well. Let us just repeat it for the 90. अब यहां पर क्या होने वाला है? 1 minute. फिर से एक बार. Create a new node. Create a new node. All right, that new node, let's say at the address 400, at the address 400, good, with the data 90, with the data 90. New node का pointer
A new node ka pointer, let me store over here is, let's say 400. New node pointer, let me store over here is a 400. And now I want to add the node. Let us start with, अब पहली चीज तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है a root is, a root null नहीं है, तो let us begin comparison from here. The data to be added is 90. A 90 is greater than 50. A 90 is greater than 50. So what I should do? What I should do? Obviously I need to think of right, but इसके right में कुछ भी नहीं है, इसके right में कुछ भी नहीं है. What to do? इसके right में कुछ भी नहीं है. What to do? Go ahead, इसके right में इसका address डाल दो. So trav.write is equal to new node. Simply add the node over there and you are done. And then you are done. Okay, that is good. In 90 this part is covered. You go ahead, you add the next node. Next node I'm trying to add is 100. Now you want to add the node 100. What all steps that you need to follow? Same steps once again. You copy this, you paste this, and I'm saying that now the data that you have got over here is 100. Let's say at the address 500. At the address 500. At the address 500, let us say that this is 500 over here. It is in front of you. And now tell me what is to be done. What is to be done? पहली चीज तो रूट तो नल है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. You take trav is equal to root and you begin the comparison. You find that 100 is greater than 50. 100 is greater than 50, but problem is that 50 के राइट में, ए 50 के राइट में ऑलरेडी नोड है. ओ 50 के राइट में ऑलरेडी नोड है. व्हाट इज टू बी डन? अगर 50 के राइट में ऑलरेडी नोड है, व्हाई डोंट यू टेक इट वन मोर स्टेप अहेड. You take it one more step ahead and again you compare and repeat the loop. Again you repeat the loop. Again you repeat the loop. Again you check if this is a value. In the next iteration you are checking value is 100 and 100 is greater than 90. Again 100 is greater than 90. अब you see that but इसके right में कुछ नहीं है. अब इसके right में कुछ नहीं है. What is to be done? Yes, go ahead and you can add the node over here. Don't you think that this is absolutely same logic that we have done earlier? Is it the same logic as we have got done earlier? Only thing वहां पर लेफ्ट में था, यहाँ पर राइट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट सिंपली से जैसे लेफ्ट का लॉजिक लिखा था वैसे राइट का भी लिख दो. एल्स, एल्स पार्ट, एल्स का मतलब क्या है? एल्स का मतलब क्या है? एल्स का मतलब ये है दिस इज आइदर ग्रेटर और इक्वल. लेस देन नहीं है, मतलब वो क्या होगा? ग्रेटर या इक्वल होगा. इफ इट इज ग्रेटर और इक्वल यू कंटिन्यू फर्दर. यू चेक इफ trav.write इज नॉट इक्वल टू नल. trav.write अगर नल नहीं है, क्या करो? उसके राइट में चले जाओ. ट्रैवर्स टू द राइट, ट्रैवर्स टू द राइट, trav is equal to traverse right. Otherwise you understand that there is no child, no child in right. If no child in right, go ahead, trav.write is equal to new node, add a node over there and then break, come out of that, and then break, come out of that. That is what all you need to do. That's it. एक बात बताओ, अभी भी हम लोगों ने 1 2 3 4 5 नोड ऐड किए. फॉरगेट अबाउट रूट. रूट छोड़ के भी हम लोग 4 नोड ऐड किए. 4 नोड ऐड किए तो हम लोग बाहर कब आते हैं? हैव यू ऑब्जर्व? या तो हम लोग लेफ्ट में ऐड करते हैं और बाहर आते हैं, या तो हम लोग राइट में ऐड करते हैं और फिर बाहर आते हैं. डू यू एग्री? या तो हम लोग लेफ्ट में ऐड करते हैं और फिर लूप से बाहर आते हैं, या तो हम लोग राइट में ऐड करते हैं एंड देन लूप से बाहर आते हैं. मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, या तो हम लोग लेफ्ट में ऐड करते हैं एंड देन वी आर कमिंग आउट ऑफ द लूप, या फिर हम लोग राइट में ऐड करते हैं एंड देन वी आर कमिंग आउट ऑफ द लूप. आर यू विजुअलाइजिंग दैट? ओ दैट इज सिंपल. तो क्वेश्चन इज दैट यहां पर कंडीशन क्या लिखूं? टू बी फ्रैंक यहाँ पर कंडीशन लिखने की जरूरत क्या है? कुछ भी लिखो कंडीशन. आई कैन जस्ट पुट लाइक इनफाइनाइट लूप. आई कैन जस्ट पुट लाइक इनफाइनाइट लूप, क्योंकि वैसे भी मुझको जब लूप से बाहर आने वाला है तो या तो लेफ्ट में ऐड करके बाहर आने वाला है, या तो राइट में बाहर ऐड करके बाहर आने वाला है. मुझको इस कंडीशन का कोई लेना देना नहीं है. आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर देयर लाइक अ इनफाइनाइट लूप. So is code completed? Yes, code is completed. But even though code is completed, we will again do the paperwork. We will again do the paperwork and we will again check whether it is going well or not. Let me continue further.
हम लोग और 2-3 नोड ऐड करके देखेंगे, सो यू कैन विजुअलाइज इट बेटर। क्या ये कोड चल रहा है क्या? कोड में जितने लिखने लायक लाइंस थे वो हो गए। अब मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, इज इट गोइंग वेल, इज इट नॉट गोइंग वेल। कोड आपको कोड शेयरिंग की यूटिलिटी के ऊपर भी दिख रहा है। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा चेक करने की। हाँ, बोलो क्या करना है? व्हाट इज नेक्स्ट नोड? और नेक्स्ट नोड टू बी एडेड इज लेट्स से 40, and next node to be added is 40. Let me go ahead. Let me go ahead. It is 40 to be added. Let's say that it is at the address 600. It is at the address 600. New node, a new node address is 600, and the data that you are adding into this, the data that you are adding into this is nothing but the 40. Okay, now you see this. So let us begin with the story. Let us begin with the story. And you want to add the node into this. कहाँ से शुरू करेंगे? ये पहली चीज तो root तो null है नहीं. Please note, your code start from there. You check if root is equal to null. Sorry, root is not null. If root is not null, you say trav is equal to root. All right. Diagram says trav is equal to root. Okay. What is the next thing? You want to compare. You want to say if 40 is less than trav's data, if val is less than trav data, it look like yes, 40 is less than trav's data. What is to be done? You check further. If trav's left is not equal to null, then go to the left, and then repeat the loop. Okay, that is good. So यहाँ पर मेरे को दिख रहा है इसके लेफ्ट में 200, इसके लेफ्ट में 200, so it is not equal to null. So go to the left, go to the left, and then बाकी आगे कुछ रन करना नहीं है, आगे वाला तो ऐसे भी else block है. So go ahead. From there, you will repeat the loop once again. You repeat the loop once again. You compare it once again. What you are comparing is val less than trav's data. Tell me, is val is less than trav data? Take a look at this. A val is 40, trav data is nothing but 30. Is it less? Oh no, sorry, it is not less. What is to be done? What is to be done? Okay, you continue further. You simply go to the else part, and into the else part, you want to check a right part. A right part check karte hain. Go to the else part. Trav dot right is not equal to null. Trav dot right is not equal to null. But do you see that? Oh, over here, trav's right, have a look at this. Trav's right is already null. Okay, ठीक है. If trav right is already null, what I need to do? Trav dot right is equal to new node. Trav dot right is equal to new node, and then come out of the loop. A new node is 600. 600, I put it over there, and I'm just coming out of the loop. That's it. I have finished. If 40 is added, I'm coming out of the loop, the job is done. Don't worry, we will repeat it once more time. I will repeat once more time. We'll go with like a 70. 70. अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, मैं अभी लाइन बाय लाइन कोड के थ्रू जा रहा हूं. प्लीज पे अटेंशन. 70. Let me create a new node over here. Yes, 70 is there. This is 70. Let's say इसका एड्रेस है 700. इसका एड्रेस है 700. मैं न्यू नोड के अंदर 700 लिख दूं नंबर. ओके, आई हैव डन दैट. ओके, now you are able to see. रुको. हाँ, now you are able to see this. Let us begin the story one by one. फिर से एक बार. Is root is equal to null? Is root is equal to null? Please do paperwork with me. Is root is equal to null? No, root is not equal to null. You continue further. Else, node trav is equal to root. Okay, node trav is equal to root. So trav is over here. Accepted. Next, val is less than trav data. A val is 70. 70 is less than 50. No. So go to the else part. Let us go to the else part. What your else part is saying? Trav dot right is not equal to null. Trav dot right is not equal to null. Trav dot right is not equal to null. Condition is true. What you want to do? Go to the right. Trav is equal to trav's right. Trav is equal to trav's right. Okay, that is great. You continue further. Yeah, and by the way, उसके बाद में वैसे भी आपको loop repeat करना है. You go back to the loop once again and you check the condition once more. You check the condition one more. You say val is less than trav's data. Oh, val is what's this one?
70 is less than trav data. Is it less than trav data? Yes, condition is true. The condition is true means go to the upper half. Upper half. But what that upper half is saying? Trav dot left is not equal to null. A trav dot left is not equal to null. Trav dot left not equal to null, condition is false. If the condition is false, you continue further. Trav dot left is equal to new node. Trav dot left is equal to new node, that is 700, and 700 in place. The node is added over here. I hope now this is clear. हम लोगों ने ये कोड, एक तो 4 नोड मैंने आपके सामने ऐड किए, मैंने आपको कोड बना के दिखाया, और 2 और नए नोड मैंने आपको ऐड करके दिखाया कि इज दिस कोड इज वर्किंग वेल और नॉट. अब बचे हुए, इट इज अ होमवर्क फॉर यू. कंटिन्यू द पेपर वर्क फॉर 80, 60 एंड 20. कंटिन्यू द पेपर वर्क ऑन 80, 60 एंड 20 एंड देन यू कैन मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. हाँ सर, ये चल रहा है, नहीं चल रहा है. अमित, क्या रिपीट करना है? I'll just add that last node once again. I'll add the last node once again, जो हम लोगों ने किया था. जो लास्ट नोड हम लोगों ने किया था, अमित पे अटेंशन. I say that create new node value. So I'm creating a new node. So 70 का नोड मैंने क्रिएट कर लिया, उसका एड्रेस मेरे न्यू नोड पॉइंटर के अंदर आ गया. अमित, हो सके तो पेपर वर्क तुम मेरे साथ करो. इफ यू डू इट यू विल अंडरस्टैंड इट. आई एम ऑलवेज टेलिंग है. अगेन, नॉट ओनली फॉर अमित, फॉर एवरीवन. जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इट ओनली मींस दैट यू आर ओनली इन अ लिसनर मोड. यू आर नॉट इन अ पार्टिसिपेशन मोड. You participate, story will be very easy for you. Anyway, I'm just going ahead. Root is equal to null. Check करो, is root null? A root is equal to null. Condition is true or false? Condition is true or false? अरे condition is true or false? False. Okay. कौन true कह रहा है? It is condition is false क्योंकि root यहाँ पर 100 है. It is not null. So condition is false. Okay, go ahead. You go there and then you go to the else part. Say node trav is equal to root. Trav is equal to root. Continue. ये जो trav pointer है, अब ये मैंने root को set कर दिया. Trav pointer मैंने root को set कर दिया. This is done. What is next? Now you want to check inside this if val is less than trav data. Val is less than trav data. And what is val? A नया node add कर रहे 70. Is 70 is less than 50? 70 is less than 50? No, condition is false. If condition is false, I need to go to the else part. I hope Amit you are listening. Go to the else part. Into the else part, you check trav dot right is not equal to null. Trav dot right is not equal to null. Trav dot right is not equal to null. Condition is trav dot right. Trav dot right. डायग्राम आपके सामने है. ट्रैव डॉट राइट. अरे ट्रू फॉल्स क्यों कर रहे हो? डायग्राम आपके सामने है, अपनी अकल क्यों लगा रहे हो? ट्रैव डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल. 400 है, इट इज नॉट इक्वल टू नल. इट इज वेरी सिंपल. एंड देन इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, saying that go to the right, traverse to the right. So trav is equal to trav's right. So trav comes over here. A trav comes over here and then a trav comes over here. अब else में तो जाना है नहीं, यहाँ से you are again going into the loop. ए वैसे भी लूप का कंडीशन हमेशा इनफाइनाइट लूप ट्रू ही है, तो इसमें कुछ करने लायक नहीं है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. द नेक्स्ट टाइम अगेन आई एम चेकिंग द कंडीशन. अभी हम लोग ट्रैव का डेटा चेक कर रहे हैं और हम लोग वैल के साथ चेक कर रहे हैं. ओके, यू चेक ए वैल इज 70. वैल इज 70. 70 is less than trav's data. A 70 val is less than trav's data. Val is less than trav data. Yes, condition is true over here. If this condition is true over here, you continue further. You go inside this. If trav left is not equal to null, check. If trav left is not equal to null, trav left is not equal to null, yes, condition is false. If condition is false, you continue further. What you are saying? What you are saying? Trav left is equal to new node. A new node is 700. Trav के left में you are putting 700. Okay, you put 700. It will start pointing to this node. It started pointing to this node, and you say break. You say break. You come out of the loop. That's it. तो हम लोग जो लूप में से बाहर आ रहे हैं, लूप में से हम लोग कब बाहर आ रहे हैं? या तो नोड को लेफ्ट में ऐड करके बाहर आ रहे हैं, या तो नोड को राइट में से
ये करके बाहर आए। सो या तो हम लोग नोड को लेफ्ट में ऐड करके बाहर आ रहे हैं, या फिर हम लोग नोड को राइट में ऐड करके बाहर आ रहे हैं। आइदर केस, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, इट इज अप टू यू। एंड आफ्टर दैट सो फाइनली, तो व्हाइल का कंडीशन क्या लिखना चाहिए? व्हाइल का कंडीशन ऐसा लिखो विच इज ऑलवेज ट्रू। सो आई हैव रिटन अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप कंडीशन व्हाइल ट्रू, क्योंकि मुझको पता है मुझको यहां से बाहर नहीं आना है, या तो मुझको यहां से बाहर आना है या तो यहां से बाहर आने वाला है। दैट इज द रीजन व्हाइल कंडीशन आई एम जस्ट मेकिंग इट ट्रू, सो दैट द लूप कीप ऑन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। या तो मैं लेफ्ट में ऐड करके बाहर आ जाऊंगा ब्रेक करके, या फिर राइट में ऐड करके बाहर आ जाऊंगा ब्रेक करके। someone was asking me the while loop condition. I guess I have repeated that as well. I hope, Amit, now it is clear. All right. And then I'm leaving it as a paperwork for you. Continue the paperwork of 80, 60, 20. और उतना तीन इसका और कर लो, you will be automatically comfortable how exactly it is working. Chalo, good. Now let us continue further. Now let us continue further. यस, वी आर नॉट यूजिंग व्हाइल फॉर कंडीशन। व्हाइल का कंडीशन हम लोग फॉल्स, व्हाइल में हम लोग कंडीशन दे ही नहीं रहे। हम लोग कहते हैं घुमाते रहो, या तो हम लोग लेफ्ट में ऐड करके बाहर आएंगे या फिर राइट में ऐड करके बाहर आएंगे। तो व्हाइल के कंडीशन का कोई मतलब नहीं था वहां पर। अब अगला क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना बहुत आसान था। हेड से चालू करो, टेल तक डिस्प्ले करो, इट वॉज वेरी इजी। बट ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। From every node, there are two options: either go to the left or go to the right. Either go to the left or go to the right, and this will add a lot of confusion. तो सर अब हम लोग ट्री को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे? तो ट्री को डिस्प्ले करने के लिए देयर आर थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म commonly used, called as in order, pre-order and post order. Let us assume that my tree is something like this. This is a parent, this is left, and this is right. If my tree is very simple tree like this, तो सर इसमें ट्रैवर्सल कैसे होगा? सो देर आर ऑप्शंस। एक ऑप्शन है, parent is traversing in between left and right. A parent is visited or parent is printed in between left and right. It is called as the in order. Second possibility, the parent is traversing before left and right. It is called as a pre-order. And the parent is traversing after left and right. It is called as a post order. So आपको पेरेंट को आपने कहां पर विजिट किया है? दोनों के बीच में विजिट किया है, देन इट इज इन ऑर्डर। अगर आपको पेरेंट ने आपको अगर आपने पेरेंट को पहले विजिट किया है, देन इट इज अ प्री ऑर्डर। और अगर अपने पेरेंट को एंड में विजिट किया है, देन इट इज अ पोस्ट ऑर्डर। सो दीज आर थ्री कॉमन मैकेनिज्म्स दैट पीपल डू, and then these algorithms can be implemented easily using recursion. So why it is using recursion? See, logic is very simple. मैंने आपको पहले बताया था, जब आपको रिकर्शन पढ़ना है तो रिकर्शन इट इज वेरी स्टूपिड वे टू लर्न इट। एवरी स्टेप करके दिखाओ। आई से दैट यू लर्न इट इन वेरी सिंपल वे। व्हाट रिकर्शन सेज? रिकर्शन सिंपली सेज, मैं प्री ऑर्डर की बात करता हूं। यू टॉक अबाउट प्री ऑर्डर, a pre-order, and I want to apply it onto the trav. See, the my logic is very simple. A pre-order मतलब क्या? Pre-order मतलब क्या? The parent has to be handled first, and the parent has to be handled first. तो ये जो मेरा trav है, let me first print trav. Let me first print trav. A trav का डेटा पहले प्रिंट कर लो, and then apply pre-order, to the left subtree, and then apply pre-order to the right subtree. Apply pre-order to the left subtree, and then apply pre-order to the right subtree. It is such a simple logic. ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ज्यादा परेशानी होती है। जो आप लोग कह रहे हो ऊपर कि व्हाट इज प्री ऑर्डर, जस्ट फॉलो दैट। कि जो करंट नोड है, एक करंट नोड को प्रिंट करो, देन अप्लाई प्री ऑर्डर टू द लेफ्ट सब ट्री, अप्लाई प्री ऑर्डर टू द राइट सब ट्री, एंड योर प्री ऑर्डर कोड इज कंप्लीटेड। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट इज दैट सिंपल। बट रुको सर, अगर ये रिकर्सिव कोड है, या अगर ये रिकर्सिव कोड है, तो रिकर्सिव कोड का कुछ ना कुछ तो टर्मिनेटिंग कंडीशन होना चाहिए। वो बिल्कुल होना चाहिए। तो व्हाट इज
व्हाट इज द मिनिमल इनपुट दैट कैन बी गिवन? इसको मिनिमल इनपुट क्या दिया जा सकता है? एम्प्टी ट्री। यस एब्सोल्युटली, इफ इट इज एम्प्टी ट्री मींस इफ trav is equal to null, if trav is equal to null, simply say return, nothing much to be done. And I'm saying that the code is completed, nothing else. The pre-order code is that simple code to follow. It is that simple code to follow. What I'm saying is that apply pre-order, पहले तो pre-order current node को print करो, apply pre-order to the left subtree, apply pre-order to the right subtree. जैसे आप लोग कहते हो वैसे कोड लिखो. It is very easy to go, very easy to go. And if obviously if the tree is empty, then return. Trav is equal to null का मतलब है it is empty, just return. I'll first write a code and then I'll show you the paperwork. First I will write the code and then I'll show you the paperwork as well. Don't worry. So public void, what we are trying to do, pre-order, and we are starting with a node. We are starting with the node. Continue further. What I'm saying, first print, first print the current node. All right, I want to print the current node, trav dot data. Okay, trav dot data, that is current node. All right, and then apply pre-order to the left subtree, trav dot left, and apply pre-order to the right subtree. All right, it is the right subtree. But if trav is equal to null, means if the tree is empty, what is to be done? Just return, do not do anything. So this is explaining process in terms of itself, and this is my base condition. Okay, that is good. But by the way, अगर मुझको इसको मेन से कॉल करना है तो मुझको क्या पास करना पड़ेगा? अगर मुझको इसको मेन से कॉल करना है तो मुझको क्या पास करना पड़ेगा? ओ आई नीड टू पास द रूट. बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. कैन आई एक्सेस रूट ओवर हियर? Oh, root is a private member. The private members cannot be accessed. What is to be done? Any idea? Oh, wrapper method. कितने इंटेलिजेंट बच्चे आप. अभी तक कहाँ थे? Okay, so public void pre-order. Let us simply write a wrapper, and from this wrapper, let me make a call to the pre-order function, and you pass the root. अब don't ask me what is wrapper. हमने already इसके related 3 कोड already किए थे linked list के अंदर. Okay, so you simply use a wrapper. So from here we are calling a method. हाँ, तुम्हें क्या पता? From here we are calling this method, and this method is having access to the root, which is in turn calling your main method, and then यहाँ से it is going a kind of a recursive calls. It is going a recursive calls, and this is all done. सर ये काम करेगा? करेगा मतलब क्या? कर चुका. You just say run as Java application. Oh, is it correct? Yes, it is correct. आप लोग चेक करके देख सकते हो. 2 मिनट हम लोग पेपर वर्क करते हैं और कंफर्म करते हैं इज इट रियली करेक्ट और नॉट करेक्ट. क्या प्रिंट कर रहे थे हम लोग? प्री ऑर्डर प्रिंट कर रहे थे. प्री ऑर्डर प्रिंट कर रहे थे. लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दिस. ऑल राइट, एंड दिस प्री ऑर्डर. हाँ, दिस इज लुकिंग गुड. चलो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस ट्राई टू डू द पेपर वर्क फॉर द सेम ट्री. ये जो ट्री अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ये जो ट्री अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, इस ट्री का हम लोग पेपर वर्क करके देखते हैं. ये क्या करना है हमें? If we are trying to talk about pre-order, and that too recursive, और लॉजिक. ए लॉजिक हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ था. लेट मी टेक अप दिस लॉजिक and paste it over there so that you see the logic side by side, and now you can see whether it is working well or not. Let us go ahead. Pay attention, everyone. What I want to do, I want to print a node. You want to print a node, so let me first print 50. Okay, let me first print 50. Chalo, 50 is to be printed, and then once 50 is printed, apply to the left subtree and then apply to the right subtree. First apply to the left subtree and then apply to the right subtree. लेकिन रुको, पहले लेफ्ट सबट्री खत्म करेंगे, उसके बाद में राइट सबट्री के ऊपर जाना है, ये याद रखना. चलो कंटिन्यू फर्दर. सो लेफ्ट सबट्री के लिए आई गेस दिस विल बी रूट. आप लोगों ने उसको क्या पास किया? ट्रैव डॉट लेफ्ट. नो, सो ट्रैव डॉट लेफ्ट जब यहां पर जाएगा तो दैट विल बी ट्रैव. यस, सो दैट विल बी रूट 30. सो अगेन you follow the route. This is 30.
30 and then apply to the left subtree and apply to the right subtree. Oh, you continue further. अब 30 का left subtree, a 30 का left subtree, you say 10, apply to the left subtree and apply to the right subtree. I find that 10 का जो left subtree है, a 10 का जो left subtree है, it is null. A 10 का जो left subtree है, it is null. I hope you are able to see it is a terminating condition. So वहां पर आगे नहीं जाएगा. A 10 का left subtree खत्म हो गया है. Let me go to the 10's right subtree. 10's right subtree, yes, it is 20. 20. Let me print 20. Let me print 20. Pay attention. 20 का left subtree, it is null. 20 का right subtree, it is again null. Oh, you continue further. अगर आपने ठीक से नोट किया, अभी तक 30 का लेफ्ट सबट्री खत्म हो चुका है. ए 30 का लेफ्ट सबट्री खत्म हो चुका है. यू गो टू द 30's राइट सबट्री. 30's राइट सबट्री, इट इज 40. You print 40, you print 40 and go to the 40's left, which is null. Go to the 40's right, which is again null. Okay, that is good. If you have noted well, 50 का लेफ्ट सबट्री खत्म हो गया. ए 50 का लेफ्ट सबट्री खत्म हो गया है. Go ahead on a 50's right subtree. 50's right subtree is 90. You print 90 and apply to the left subtree and apply to the right subtree. Apply to the left subtree, it is 70. 70, you print 70 and then apply to the left subtree, apply to the right subtree. You continue further. You got left subtree, it is 60. That is good. It is 60. अब 60 के लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, अच्छी बात है. 70 का लेफ्ट सबट्री खत्म हो गया. 70 के राइट सबट्री में जाते हैं. यू प्रिंट 80. यू प्रिंट 80. 80 के लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, दैट इज गुड. 90s लेफ्ट सबट्री इज कंप्लीटेड. 90s left subtree is completed. Go ahead onto the 90s right subtree and it is 100. And this one is my tree in a pre-order manner. 50, 30, 10, 20, 40, 90, 70, 60, 80, 100. Oh, 50, 30, 10, 20, 40, 90, 70, 60, 80, 100. I hope this was the exactly same tree that we have found. Is it so? Okay, great. Don't worry, I will repeat it once again. Even though you are not asking it, I'll repeat it once again. क्योंकि अगर आपको एक प्री ऑर्डर समझ में आता है तो बचे हुए इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दे आर सिमिलर. तो कोई भी एक अच्छे से समझो, बचे हुए कॉपी पेस्ट है. एक अच्छे से समझो, बचे हुए वैसे भी कॉपी पेस्ट है. Let us just go ahead and let me repeat it once again. Let me repeat it once again what you are saying. So what is the logic? The logic begins with the root. Logic begins with the root. So this is 50. You print 50. You print 50. Apply pre-order to the left subtree, and after that apply pre-order to the right subtree. Oh, first let us apply. We have applied 50. Now we have applied 50. See, Gurmukh, do you really believe that कि आपको मैं आपको कब से एक ही चीज बता रहा हूं, रिकर्शन आप लोग जितना लाइन बाय लाइन पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा. Learning recursion line by line is something you are creating a trouble for yourself. Recursion you need to always understand at a one pass and you need to understand the base condition. So जहां पर लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए था मैंने आपको बताया. इससे पहले हमने ऑलरेडी 3-4 कोड मैंने आपको लाइन बाय लाइन ये कैसे पढ़ के दिखाया है. बट दैट इज एक्चुअली उससे कोई आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है, उससे आपका कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है. और जितने मल्टीपल रिकर्सिव कॉल होते हैं, सो दैट इज 100% क्रिएटिंग अ लाइक मोर कंफ्यूजन. आप लोग कंफ्यूजन बढ़ाओ मत, आप कंफ्यूजन कम करने की कोशिश करो, आई गेस. सो आई एम सेइंग दैट अप्लाई टू द लेफ्ट सब ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एंड अप्लाई टू द राइट सब ट्री, वी आर टॉकिंग ओवर है. चलो अप्लाइंग टू द लेफ्ट सब ट्री, ये पहले लेफ्ट सब ट्री में आते हैं. लेफ्ट सब ट्री में वापस से हम लोग कह रहे हैं हमको वापस से प्रिंट करना है, वापस से प्रिंट करना है. यू प्रिंट 30 एंड आफ्टर दैट यू अप्लाई टू द राइट सब ट्री एंड देन यू अप्लाई टू द लेफ्ट सब ट्री. ओके, दैट इज गुड. इसका 30 का लेफ्ट सब ट्री. चलो अभी हम लोग 30 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर गए. 30 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर अब दिस इज
एस्टिमेट, हाँ 30 का लेफ्ट सब ट्री के अंदर, 30 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर, सो दिस इज 10, लेट अस प्रिंट 10, let us print 10 and then apply to the left subtree and then go for the right subtree. But wait, you are applying to the left subtree, इसका जो left subtree है, you have reached to the terminating condition. What is terminating condition? Trav is equal to null, then you return. Okay, that is good. Now you go to the right subtree. And what is the right subtree? This is the right subtree. Now we are into the right subtree. Let us go ahead and apply to this. Apply to this, print 20 and then apply to its left subtree which is null, apply to its right subtree, it is also null. So again terminating condition, you come out. You must have noted that 30 का left subtree खत्म हो गया, ये 30 का left subtree खत्म हो गया है. अब क्या करो, 30 के right subtree में चले जाओ. 30 का right subtree, it is 40, it is 40 and then you print 40, you print 40, apply to its left subtree, apply to its right subtree which are like a null trees, you just return from there. 50, 50 का लेफ्ट सब ट्री खत्म हो चुका है, 50 का लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया है. यू कंटिन्यू एंड यू अप्लाई इट फॉर right subtree. On a right subtree, you find 90 over there, you print 90, you print 90 and then apply to its left subtree and then apply to its right subtree. Okay, its left subtree, you continue further, like a 70, you print 70, apply to its left subtree and then apply to its right subtree. Okay, that is good. You apply to its left subtree, continue, it is 60, 60 and then 60 के लेफ्ट में कोई नहीं है, रिटर्न इमीडिएटली. 60 के राइट में भी कोई नहीं है, रिटर्न इमीडिएटली. 70 का लेफ्ट खत्म हो चुका है, सो 70 का लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया है. अप्लाई टू द 70 राइट सब ट्री. 70 राइट सब ट्री इज 80, सो यू प्रिंट 80, you print 80, 80 का लेफ्ट सब ट्री नथिंग, 80 is right सब ट्री there is nothing. ओके, 90 के लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया, ये 90 का लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया है. गो अहेड, अप्लाई टू द राइट सब ट्री. राइट सब ट्री इज 100, 100 and 100's left is no, 100's right is no. This is done, nothing extra is to be done, which is like a result और वो आपके सामने दिख रहा है. This is nothing but your pre-order, a pre-order using recursion. तो सर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, कोड कॉपी पेस्ट करते हैं और सिर्फ ऑर्डर चेंज करते हैं. कोड कॉपी पेस्ट करते हैं और सिर्फ ऑर्डर चेंज करते हैं. आपने नोट किया होगा प्री ऑर्डर के अंदर रूट सबसे पहले विजिट होता है. कॉमन सेंस से आप लोग रूट से ही शुरू करते हो, तो इट हैज टू बी विजिटेड फर्स्ट. लेट अस कंटिन्यू फर्दर एंड लेट अस ट्राई इट विद द इन ऑर्डर. इन ऑर्डर अभी मैं कोई पेपर वर्क नहीं दिखाने वाला हूं, दैट यू कैन ट्राई इट ऑन पेपर. इफ यू कुड नॉट, लेट मी नो, वी विल सी इट टुमारो. So it is like in order. Have a look at this. The in order, please pay attention and see the changes in a code are very simple. All we are doing is that it is in order with the root. That is good. So you make a call to the in order, you make a call to the in order. But in order क्या कहता है? In order कहता है first apply in order to the left subtree. Pay attention. Apply in order to the left subtree. Visit the current node. Visit the current node and then apply in order to the right subtree. Apply in order to the left subtree, visit the current node and apply in order to the right subtree. So is it done? Yes, it is done. Program is completed. Program is completed. You simply go and mention this in order and you will find that the output you will see in order. Please note, output you will see in a order. Have you understood? अरे कुछ दिखा क्या? Output is in order. Yes, output is sorted order. This is what all I'm saying. And that is the reason, another reason why it is called in order, where the root is visited in between. Where the root is visited in between. Paperwork आप लोग करना, you will understand वो in order कैसे आ रहा है. And then the last one, we will see this much and then we will pack up. The last one, where we talk like post order. Post order, again copy paste the code. Again copy paste the code. And we have got like a post order, post order, post order, post order, post order. Okay, post order, post order.
and it is post order. Have it. What I'm saying is that what is post order? How to follow? First, apply to the left subtree, then apply to the right subtree, and then visit the current node. So current node is to be visited at the end. A current node is to be visited at the end. Oh, you understand that? Let us just go ahead and run this. You'll automatically find that in that root is always at the end. Oh, do I see that root always at the end? Yes, this is nothing but the post order, and you find that root is visited at the end. So प्री ऑर्डर में रूट हमेशा स्टार्टिंग में होता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट हमेशा एंड में होता है, और इन ऑर्डर में रूट इन सॉर्टेड ऑर्डर, सॉरी ये सॉर्टेड ऑर्डर में आउटपुट आता है और रूट इन बिटवीन होता है. दैट इज समथिंग आई एम एबल टू से इट. आई होप दिस इज क्लियर. राइटिंग कोड इज वेरी सिंपल. अगर किसी को नहीं, किसी को बहुत शौक है, नहीं सर हमको एक एक लाइन बाय लाइन करना है, डू नॉट टेक वेरी बिग ट्री, मेक कीप इट स्मॉल ट्री. 4-5 नोड से बड़ा ट्री मत लो. जितना बड़ा ट्री लोगे और रिकर्शन लाइन बाय लाइन करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. सो किसी को अगर करना है तो आई डू नॉट रिकमेंड डूइंग इट. अगर आई वुड से दैट जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया उतना पेपर वर्क कर लोगे, यू शुड बी मोर कंफर्टेबल. यू शुड बी मोर कंफर्टेबल. ट्राई इट विद द प्री ऑर्डर, ट्राई इट विद द इन ऑर्डर, ट्राई इट विद द पोस्ट ऑर्डर. और अगर लाइन बाय लाइन करने का शौक है, इतने बड़े ट्री के साथ मत करना. डू नॉट टेक मोर देन 5 नोड्स. जस्ट ट्राई टू डू इट. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, मैं पहले ही बता रहा हूं. दैट इज ऑल अबाउट रिकर्शन. तो सर ये रिकर्शन इंपॉर्टेंट है. पूरे बाइनरी सर्च ट्री के जितने सारे कोड है वो सारे रिकर्सिव कोड ही है. तो प्रोबेबली कल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज दैट, हाउ टू फाइंड आउट द हाइट, हाउ टू डू इट विदाउट रिकर्शन. अगर आपको विदाउट रिकर्शन करना है तो वो कैसे करना है, ये भी हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एंड दैट्स इट, नथिंग मच. और उसके बाद में हम लोग देखेंगे हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द ट्री. एंड देन फ्यू कंसेप्ट आई विल टेक अ लुक एट योर सिलेबस. आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम द ट्रीज, दैट वी विल टेक अप, राइट. सो टुमारो प्रोबेबली विल बी एबल टू फिनिश ट्रीज फुल्ली, प्रोवाइडेड आज जो हम लोगों ने ट्रीज पढ़ा है वो आप लोग प्रॉपरली अच्छे से पेपर वर्क करके कोड लिख के आओगे. देन टुमारोज लेक्चर शुड नॉट बी ट्रबलसम फॉर यू, right? Thank you very much. Anyone has got doubt, they can wait. Others, they may leave.